Right. So here, so far we have seen, क्या देख लिया है हमने? We have started data types. In data types, we have already seen what? Numeric types. Within that, we have seen integer, float, then complex. Complex में remember वो x plus iy होता है and imaginary part and real part, that thing we have seen, right? Hope you remember how to print only imaginary part, how to print only real part. ठीक है? So these three things have been done. Majorly you will need to know int and float. Complex बता दिया है in case it comes out somewhere, appears somewhere in the question paper. Okay. Now then we started the discussion on sequence types. Okay. Within sequence types, we have seen strings. Then comes lists and tuples. So we have seen this. We'll start with lists. Okay. So today we are starting data types, within data types, sequence types, within sequence types we are starting strings. Sorry, lists. Okay, because they are in the same family. Okay, so all the three will show some of the common features. तीनों common features show करेंगे. तो what are the common features of all the three? Because they are in the same sequence families, common features to all. Common features में क्या क्या आ जाएगा? Slicing. ठीक है, slicing is correct. Indexing, then you have slicing, then you have concatenation, और क्या है? Replication, ओके, replication, और भी कुछ कॉमन है? एनीथिंग एल्स कॉमन? Using in loops. Remember we had two ways of using in loops, either using range index based or directly using the name of the or the identifier of the string, in which case it list will be formed in the header, which will be comprising of what? Characters as different elements. So that is also here same. Okay, using in loop, or rather usage in loop, is same. Which is also known as traversal. How you access each of the elements one by one. Traversal. Okay. Then you have, and yes, I had updated all these videos and this digital boards in the folder. If you can check, if you want, you can check from there. Right. And again, len function works on all.
on all. मेजर डिफरेंस क्या है? Or not major difference, we'll study it. So mutability and immutability. म्यूटेबिलिटी एंड इम्यूटेबिलिटी. ठीक है, तो रिमेंबर strings are what? Immutable. Same is the case for complex, float and int. Okay, and lists are mutable. Okay, even the tuples are immutable, and one is dictionary. Mapping type, within mapping type you have dictionary. Dictionary is also mutable. ठीक है, तो जो underlined है, this means mutable, and this refers to as immutable. Okay, now we'll go, though we have seen, so we'll quickly see how the common features apply in a similar way to lists also. Okay, सबसे पहले we'll see with len function. Len क्या करता था in case of what it used to do? कौन बताएगा? Length of the Length of the sequence. length of the string. ठीक है, यहां पे क्या करेगा? In case of list, what it will do? Number of elements. Another word for elements are items. Okay. और भी कुछ बोलते हैं क्या? एलिमेंट्स बोलते हैं, आइटम्स बोलते हैं, चलो ठीक है, देयर इज वन मोर नेम, इट्स नॉट कमिंग टू माय माइंड. एलिमेंट्स और आइटम्स इन द लिस्ट. Okay, or what we will do is list and tuple both we will take together, क्योंकि ज़्यादा there is not much of a difference. Okay, list and tuple. Okay, so in the case of list and as well as tuple. Okay, now we'll see indexing. इंडेक्सिंग में क्या होगा? Each element of the list or tuple has specific or has a position associated with it. What known as index position. And then starts from 0 if counted from left to right.
else starts from -1. ठीक है, देख लो ये, इज इट क्लियर? बताइए, प्रियंका, अजय, सौरभ, अखिला एंड अदर्स, जितना अभी तक लिखा है, वॉट एवर आई हैव रिटन, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल. ओके, राइट, गुड. ओके, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं इंडेक्सिंग का. इंडेक्सिंग क्या होगा? A is a list, 1 2. अच्छा, इसमें एक और चीज, उसका एग्जाम्पल देखने से पहले विल सी वन मोर फीचर अबाउट दिस. Lists are, rather this should have been the first point, the defining definition of list. Lists are of sequence types, ठीक है, sequence built-in types which are heterogeneous. अभी स्पेलिंग देख लेना हेट्रोजीनियस का. हेट्रोजीनियस collection of types or data types. Heterogeneous मतलब क्या? What do we mean by heterogeneous? That means one element can be of different type, another element can be of another type, third element can be of third different type. ठीक है? So that means heterogeneous. Uh, there is something similar to lists in other programming languages known as arrays. Arrays are similar to lists, exactly same as lists in a way, but they are homogeneous types. That means if one element you are giving as integer, all other elements should also be integer. If one element you are giving as string, all other elements should also be strings. तो ब्रैकेट में लिख देता हूं, दो नॉट नेसेसरी, जानने की जरूरत नहीं है. अनलाइक arrays of other programming languages. ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा. ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ lists. देखो, it is heterogeneous type. It doesn't mean कि it should be of मतलब you cannot create a homogeneous list. It's up to you. सारे elements को integer डाल दो, but it has the flexibility of having mixed data types in it. ठीक है, तो let's say there is a list A 1 2 9 -7 -60 4.5 and -3.28. So what is this? ये homogeneous list है या heterogeneous list है? Is it a homogeneous list or a heterogeneous list? Heterogeneous. Why? Because it has float and integers. हाँ, क्योंकि इसमें all the elements are of not of single type. अगर single type का होगा तो then it will be a homogeneous list. For example, B
less tuples. Hmm. Okay. So let's say now I'll create a tuple. Now tell me, is this tuple a heterogeneous type or homogeneous type? Heterogeneous type. Why? Homogeneous type, sorry. Homogeneous type. Right. Don't get confused by this 10. वो 10 भी string के अंदर में है. ठीक है? So this way you can define. Okay. Now ये तो हमने देख लिया. So you have understood कि क्या homogeneous और heterogeneous क्या होता है. Tuples can also be heterogeneous, 1 high 4.5. This is a heterogeneous tuple. Example of indexing. कैसे करेंगे? मान लो ये A है, इसमें से if I write A5, क्या मिलेगा मुझे? I'll write a few things. Refer to this ABC. बताओ. Very simple. Yeah, who will tell? Priyanka, what will be the answer of third one? 9. थर्ड वन का बोल रही है 9. 1 -1 -2 -3 -4 -5. Correct. Answer will be 9. Saurav believes first one will be -61. 0 1 2 3 4. देख लो सौरभ, गलत हो गया तुम. कैसे काउंटिंग जीरो से शुरू होता है सौरभ? सो दैट इज रॉन्ग. 0 1 2 3 4 5. That's why I am asking you. In the exam, in the hurry, you will make mistakes. -2, b ka -2. Start when the index is negative, you will start counting from right side. -1 -2, that will be hello. And then 4.5 was correct, Priyanka. C2, 0 1 and 2, again 4.5. ठीक है. Now we have seen indexing. हाँ ठीक है सर. We have seen indexing. We will see slicing.
Slicing may apply the same concept as strings. Obtaining smaller list from the original list. या स्मॉलर लिस्ट को सब लिस्ट भी बोलते हैं फ्रॉम द ओरिजिनल लिस्ट. ठीक है. So let's say from the list or tuple, wherever I am writing list, assume it as tuple. Okay. Let's say there is a tuple ओके. तो अच्छा, पहले ये बताओ कि if you want only a -50 to be printed using this, what shall you write? I only want -50, this -50 to be printed. How shall I use indexing? First of all, how many elements are there that you have to determine? How many elements are there? This is the first element, second element, third element, fourth element, and fifth element. This is at index position 0. This is at index position 0. This is at index position 1. This is at 2. This is at 3. And this is at 4. ठीक है? Sir, A -2 1 A -2 1. अच्छा, माइनस क्यों ले लियो? चलो, that will not be wrong. Saurabh believes A3 1. ठीक है. So let's say if I print only A3, what will be the output? So 0, 1, 2 and 3. So entire value or the element at this index position will be picked up. So output will be list 1 -50 by and 3. तो ये लिस्ट आ रहा है आउटपुट. दैट मीन्स दिस एंटायर थिंग ओके मीन्स दिस लिस्ट. ठीक है. दिस एंटायर थिंग मीन्स दिस लिस्ट. सो नाउ फ्रॉम दिस लिस्ट इफ यू हैव टू पिक अप -50, हाउ विल यू डू? इस लिस्ट में कौन से पोजीशन पे -50 है? -50 एट द पोजीशन 0, 1, 2, 3. So you will see that in this list, at the first position, first index position, you have -50. So you will write print A3, ठीक है, and A3 means this list, whole list. In this whole list, you want element at the index position 1. So you will write 1.
ठीक है. So answer is 3-1. What Anand has done is also correct, or you can also write it as print. He has started indexing counting from right side. This is -1, this is -2. So you can write a -2. In this -2, what he has done is he has taken the element as the at the first position. So that will also be correct. यहाँ पे भी तुम राइट साइड से शुरू कर सकते हो, और you can even write print a -2. A-2 will give you this list, and then start in this list also start counting from right, -1, -2, -3. This is also acceptable. ये देख के बताओ everyone कि have you understood this here? अजय, विष्णुप्रिया, प्रियंका. Okay. Now, next question is only for Priyanka. How will you print only I'll give you 2 minutes. Only y of by. यहाँ जो y है ना उसको ओनली सिर्फ प्रिंट करना है. ओके, टेक 2 minutes, देन आई join you back. यस प्रियंका, एनी आइडिया? बहुत सिंपल है, देखो. प्रशांत, रुक जाओ, क्या लिख रहे हो तुम? इज इक्वल टू बाय. देखो, और शैल आई सॉल्व? शशांक, थोड़ा सोना कम करो. ओके.
अरे बाय मतलब यहां से उठाना है, क्या कर रहे हो तुम लोग इसमें? दिस बाय इज हियर फ्रॉम दिस क्वेश्चन. In this A, how you will print only y of by? अच्छा, प्रियंका believes, ओके देखते हैं. She has sent me the answer like print 3 minus 2 and 1. ओके, तो देखते हैं. So A3, this will give you what? This list 1 minus 50 by and 3. Okay. In this list, she intends to take the element at index position -2. तो -2 है तो राइट साइड से काउंटिंग करेंगे बिकॉज इंडेक्स इज नेगेटिव. -1 -2. सो हियर -2 will give me by, and in this by the elements are 0 1 and 2, and she is saying 1, which is absolutely correct. Very good. ठीक है. But what I will suggest is, okay, yes Priyanka, your answer is correct. Priyanka, can you use some positive index for this? Positive index use करेंगे तो क्या आएगा? Okay, okay, though negative is also okay, but positive index use करेंगे तो what will be the answer? Positive she believes 3. Here -2 की जगह पर देखो, in this list by is at 0 1 and 2. ठीक है, तो 3 नहीं होगा, हाँ 2 होगा, क्योंकि the list that you have extracted, in that also the elements will be numbered starting from 0 only ना. So you will see in this by is at 0 1 and 2, second position पे है. So you will again use 2 for that. Okay, so इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर जो होगा वो ये भी हो सकता है, प्रिंट A3 2 and 1. ओके, प्रशांत भी सही बताया था. सौरभ रोड -2, तो -2 से ये हो जाएगा, उसमें भी -2. हाँ, -2 दैट इज ऑल्सो करेक्ट. ठीक है, राइट. सो बट व्हाट आई विल सजेस्ट, अब ये तो हम लोग सीख लिए हैं इंडेक्सिंग में, आई थिंक यू ऑल आर वेरी कंफर्टेबल नाउ. बट व्हाट आई विल रादर सजेस्ट इज इन द एग्जाम always try to use the positive indices only if you have to answer. ठीक है, अगर वो दिए हुए आउटपुट फाइंड करना में है तो देन यू यूज योर लॉजिक. बट इफ यू हैव टू राइट द आंसर फॉर इंडेक्सिंग, ट्राई टू यूज द पॉजिटिव इंडिसेस एज फार एज पॉसिबल. ठीक है. However, try to use positive indices. इंडेक्स का प्लूरल इंडेसेस होता है, एज फार एज पॉसिबल. Okay. Now we are coming to slicing. गुड, प्रियंका को लग रहा है कॉन्फिडेंस आ गया है पूरा. एग्जाम्पल्स ऑफ स्लाइसिंग. ओके,
मान लो I'll take the same, ठीक है, मैं ये I'll pick up the same list, same tuple. ओके, सो इसकी इंडेक्स पोजीशन 0 है, 1 है, 2, 3, 4 एंड हियर यू हैव इंडेक्स पोजीशन, और भी लिख देते हैं 10 -3, ओके, स्ट्रिंग, ठीक है। Now, and then this will be 5, 6, and 7. So let us write 5, 6, and 7. Here, when you are counting from left to right, when you are counting from right to left, let the output, the index positions will be -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, and -8. यूज द सेम आइडिया ऑफ कटिंग, वो जो कट करके स्लाइस करते थे स्ट्रिंग में, ठीक है, और आंसर दीज क्वेश्चंस। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ए, प्रिंट अगर करेंगे, लेट्स अज्यूम कि प्रिंट इज देयर विथ एवरीवन, ईच ऑफ दिस ए, ABCD क्यों यूज करने लगा मैं?
सॉल्व करते रहो तुम लोग। और एक क्वेश्चन जो लास्ट एग्जाम में दैट केम, वन मिनट, you can take this as 11th question. This is 11th. चलिए बताते चलिए, फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? No need to type if you taking it too long. If it is taking too long, you can speak also. String will be reversed. Hmm? Tuple will be reversed. Tuple will be reversed. Yeah. Tuple को change हो ही नहीं सकता है. How will tuple reverse? देखो, पहले एक छोटा सा कंसेप्ट ये समझ लो सौरभ, कि स्लाइसिंग डज नॉट मॉडिफाई द ओरिजिनल टपल और लिस्ट. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल a is equals to 1 comma 2 comma 3 and if you write print a colon minus 1, देखो क्या आएगा, you will get a tuple, new tuple बनेगा. That original tuple a is not changed. सौरभ, is it clear? Yes, sir. I meant that only, sir. हाँ नहीं, मेंट नहीं, वो बोल दियो तो इंटरव्यू में फेल कर जाओगे फिर. Okay. ठीक है, यू शुड बी वेरी करेक्ट टेक्निकली ऑल्सो. तो व्हाट यू शुड रिप्लाई इज, इट विल गिव अ न्यू टपल विच विल हैव द एलिमेंट्स इन रिवर्स ऑर्डर व्हेन कंपेयर टू द ओरिजिनल टपल. ठीक है, ठीक है. तो रिमेंबर ऑलवेज दैट स्लाइसिंग इन एवरी ईच ऑफ द सीक्वेंस टाइप्स गिव्स अ न्यू टाइप और न्यू वैल्यू. ठीक है, वो ओरिजिनल को मॉडिफाई नहीं करता है. ओके, राइट. So this is correct. Yes, mu reversed tuple with respect to a. Okay. Why? When you are using the step value as negative, by default the starting value will be taken as -1 and ending value will be taken as minus of len -1. ठीक है, तो यहां पे स्टार्टिंग वैल्यू क्या हो जाएगा बाय डिफॉल्ट? -1 and end value will be what?
एंड वैल्यू क्या हो जाएगा? Anand, Sir, what will be the end value? -1 to -8. -8 होगा. If you write -8, then the while going from right to left, immediately जो position पहले आएगा, it will stop there. What I said, if end position नहीं दिया है, तो it always takes the end value index position as, and when the step value is negative, Minus index value -9 लेगा, नहीं so sir, that even the it's last one is covered. Remember ना कि because the step value is negative, you will start going from right to left. और उस direction में whatever is specified, उस before reaching that, whatever is the value previous to it, it will stop there only. ठीक है? -7. So in order to complete all, you should suggest -9 so that before -9 it should stop at -8. ठीक है? तो it will be implicitly assumed क्या? This will go from -1 to -9. Remember, ये क्या लेता है? माइनस लेन -1 या लेन -1 नहीं, माइनस ऑफ लेन -1. लेन -1 कर दोगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, नेगेटिव नहीं आएगा. ठीक है? एंड देन दिस इज -1. ओके, what will be the answer in this case and what will be the assumed values here? क्या होगा जल्दी बताओ. The quicker you reply, or the sooner you reply, the sooner we will wrap up because this is the last topic for today. Yes, Saurav. From hello till okay it will be printed. What will be the second blank? ये second blank में क्या आएगा? And that will be 8 हाँ? till the end. That Index will be 8 will come. number बताओ number. 8. That will be 2. 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8 and later it will be 1. 1. Okay. So it will start from 2, go till 7, and every time it will jump by 1. So 2 is hello. So it will give you a new tuple. ठीक है? It will give you a new tuple which will start from hello. Okay, and hello, then this list, and then 7, 10, -3, and okay. ठीक है? It will give you a new tuple. What in this? What will be this blank? So it'll start from -2, go to -9. Yeah, so Prashant is correct. ठीक है? So ये -2 से शुरू होगा, तो this will give you, ये तुमको ऐसा कुछ देगा, a tuple like -3, फिर -4, सॉरी नॉट -3, -4 पे कौन सा है? 7, देन -6 पे हेलो, ठीक है, अब -8 पे -5, ठीक है, ऐसा टपल देगा. हाउ -9? देखो, we have seen that whenever the ending index is whenever the ending index is missing, ठीक है, in that case it depends on the step value. If a step value is positive, that means if you are going from left to right, then it will take the last value, length of the string. और अगर ये step value negative है, that means when you are moving from left to right, it will take minus of len -1, जैसे इसमें लिया था. So minus of len is so that it can include the last position also.
So -8 is the last position. So -9 लेगा तभी ना right to left जाते हुए में just before -9 -8 will be there and even the last element will be incorporated when coming from right to left. प्रियंका ये बताओ समझ में आया या नहीं? नहीं आया तो I'll explain again. Okay, because this is the best time to clear up everything. Okay, मतलब clear है ना? If there is doubt मुझे बता दो क्योंकि फिर बाद में चांस ना मिले. Okay, क्या हो गया? All right. Similarly, index is negative. यहाँ पे negative index है तो क्या होगा? Again, start value will be -1, end value will be minus of len -1, which will be -9 again. So this will translate to -1 colon -9 colon -2. Okay. Here, step value is positive. So counting will start from left side. So starting will be 0. So 0, 7, 1. ठीक है, इसका आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 6 का. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ये कोलोन वाला सीक्वेंस लिख लो. इट विल बी List 7, 10 will be printed. लिस्ट या टपल? List, sir. टपल का जब स्लाइसिंग करते हैं तो टपल मिलता है, लिस्ट का जब स्लाइसिंग करते हैं तो लिस्ट मिलता है. No, I mean the elements of the tuple will be अच्छा अच्छा, including एलिमेंट्स. list. तो ये क्या बोल रहे हो तुम? दिस विल बी इक्वल टू Tuple including a list 7 and 10. टपल में करोगे और इन दिस विल इट विल गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट. Right to left. राइट टू लेफ्ट. Yeah. श्योर? Yes, sir. That is right to left direction is defined decided by what? Start, end or step? Step value. Step value. यहाँ पे step negative है Positive है. तो left to right जाएगा ना counting. Yeah. मतलब हाँ. Direction में confuse मत करो. So this is, तो first cut will be there at -5 which will be including. तो first cut will be here. Last cut will be at 6. तो 6 दिया है तो पॉजिटिव वाले को देखो. एंडिंग कट विल बी एट 6. ठीक है, नीचे से कट यहां मारे स्टार्टिंग. दिस इज स्टार्ट एंड 6 when positive is given you have to mark at 6. This is end cut which will be excluded. ठीक है, so 6 is end excluded, so it will go till 5 only. Okay, till here only. Why? Because step value is positive, that means you are going from left to right. जब left to right जा रहे हो तो it will include 5, it will include -5, -4, -3 क्योंकि +1 1 होते जाएगा. या अगर ऊपर वाले पॉजिटिव को लेना है तो it will include 3, 4, 5, not 6 because that was the end cut. ठीक है, so इसका आंसर हो जाएगा this list. ठीक है, तुम लोग के एनालिसिस के लिए मैं उसे छोड़ दे रहा हूँ. Okay, so the answer will be list 1 -50 by 3. Okay, then 7, then 10. ठीक है, tuple. Also remember that
slicing of tuple gives new tuple. I'll stop here only. And slicing of list gives new list. ओके, इसका क्या मतलब है यहां देख लो। अगर वो लिस्ट तुम्हारा 3 है, देखो वो लिस्ट देगा। ओके, न्यू लिस्ट। ठीक है, आई हैव एक्सप्लेन दिस। आई लीव दिस रिमेनिंग क्वेश्चंस फॉर यू पीपल। जाके रिवाइज करो, एनालाइज फ्रॉम द फर्स्ट, टेक अ स्नैपशॉट। आई विल शेयर दिस फाइल, बट टेक अ स्नैपशॉट, बी कंफर्टेबल विद दिस थिंग। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल डिस्कस टुमारो, और डाउट होगा तो फिर कल बताओगे तुम लोग। ओके, ठीक है, इसका स्नैपशॉट ले सकते हो इन केस आई फॉरगेट टू सेंड अर्ली टुडे। ओके, so make sure that you are solving this and coming again tomorrow. So tomorrow I guess will be the last class for this strings इसका concept पे। now we will be seeing it from the perspective of programming। ठीक है, उस पर कुछ mixed programming करेंगे हम लोग, strings पे, lists पे, tuples पे। okay, okay, ठीक है। if you have comment and please seriously solve this and come, और डाउट होगा तो बताना।